Hello members, this is Aman from Upmost Stocks. So we are doing a stock analysis not for identifying the target of this particular stock, but for identifying major resistance and major support levels. So this stock that we are discussing is Vedanta Limited. We will try to identify the major resistance levels for this stock and major support levels for this stock. So the reason for doing this particular stock is that this stock has given a breakdown, of this symmetrical triangle pattern on 17th of January 2022. And on the next day also, that is on 18th of January 2022, it again fell down. However, this stock has been trying to recover since the last 2 days and has found resistance at this particular trend line, or you can say the lower trend line of the symmetrical triangle pattern, which is coming around to be 330 rupees. So since this stock has given a breakdown of this symmetrical triangle pattern, so we will just be trying to identify as to where Vedanta is likely to find resistance when it will go upwards, when it will try to move upwards, and this support levels that will work for it in case it again starts falling in the next few days. So anyone who is holding Vedanta should consult his or a financial advisor before taking a final decision on this particular stock. So you can see that this stock has already given a breakdown of this symmetrical triangle pattern on 17th of January 2022. So as of now, the stock is trying to recover, since you can take yesterday also and today also, but it has found resistance at a price of, it could not close above the price of 328. However, the stock needs to re-enter this particular triangle in order to reverse this entire breakdown. If it continues to operate below this particular line for the next few days, then we can see further fall in Vedanta Limited. Also, Nifty is quite weak as of now. The indexes are quite weak, but metal stocks are still holding good. So we need to see as to how they are going to perform in the near future. So Vedanta is likely to find resistance at this particular line. So once Vedanta enters this particular triangle again, it is likely to find resistance first at the level of 333 rupees. Why we have mentioned 328? Because it has closed at this price today. It has closed around 327.55 to 328. So we have taken it as a resistance. You can see also that there is some kind of resistance at this particular level. After that, it is going to find resistance at this particular line. And once it crosses this particular line, it is likely to find resistance at the level of 333. So the next major resistance for Vedanta would be 333 once it crosses 328 and enters this particular line. So it can enter at 330, it can enter 331. So resistance is likely to come at the level of 333. Once this level is broken, then the next major resistance for Vedanta is likely to come at 341.50. So as of now, we are discussing only 3 levels because Vedanta will have to make a significant effort to enter in this symmetrical triangle pattern. So 3 levels that you, basically 2 levels that you can keep in mind for immediate short term would be 333 and 341.50. So Vedanta is likely to face resistance at these 2 particular levels. However, if Vedanta continues to operate below this line for the next few days, then it is very important for us to know as to where it is going to find support. So the first support for Vedanta would come at this price of 318. We have already mentioned the information. And if it breaks 318 and continues to operate below this price, then it can easily touch the level of 309 within next few days. So the major support levels are coming around to be 318 and 309. Yes, there are some intermediate supports like 315, 314, but we believe that they will not be strong enough for Vedanta to hold. So the major support levels that are coming on the downside are 318 and 309. We are not trying to make any projections on the basis of the symmetrical triangle pattern, because this symmetrical triangle pattern is indicating an upside or downside of 70 points. So 70 points in Vedanta would mean that from the breakdown price, Vedanta can go up to 328 minus 67. So it can touch up to 261. So it is very unlikely that it is going to touch 261 immediately. So we are discussing
the major support and major resistance levels at in a very, like, you can take for a very short period of time. So if these levels also get broken, then we will consider revision in the support levels. So anyone who is holding Vedanta should consider this line as a major resistance for Vedanta. As of now, you can see that it almost touched this line today and just fell back. So you will have to take this line into consideration as the major resistance. After that, it will be 333. And once 333 is done, then it is likely to go up to 341.50. The support levels would be 318 and 309. So please keep these levels in mind if you are holding Vedanta, and you can discuss with your financial advisors as to how you should manage your holding in this particular stock in case it goes up or goes down. So with this, I would be ending the video in English and will be moving on to Hindi. In case you have any queries, comments or suggestions, please post them in the comment section and we will reply to them ASAP. तो हेलो मेंबर्स, हम लोगों ने ऑलरेडी स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लिया, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। अभी हम एक और मेटल स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। हम इस स्टॉक में कोई प्रोजेक्शन करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि जो प्रोजेक्शन निकल कर आ रही है वो थोड़ी सी अजीब निकल कर आ रही है, क्योंकि जो पैटर्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। और जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की जो विड्थ आ रही है, जो आप ये एरो देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि वेदांता में या तो ऊपर की तरफ 67 रुपीस का अपसाइड आ सकता है या फिर नीचे 67 रुपीस का अपसाइड आ सकता है, और सॉरी डाउन साइड आ सकता है। तो क्योंकि वेदांता लिमिटेड ने नीचे की तरफ तोड़ा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को, तो वो 67 पॉइंट्स नीचे जा सकता है। बट अभी ऐसा नहीं लग रहा है इमीडिएटली, क्योंकि 261 का लेवल निकल कर आता है अगर हम ब्रेकडाउन प्राइस में से माइनस करते हैं, जो कि अराउंड 328 329 है। तो 261 अभी इमीडिएटली तो हमें आता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो बहुत दूर है। तो इसलिए अभी हम लोग कोई प्रोजेक्शन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं स्टॉक में, हम सिर्फ आपको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स बता रहे हैं। तो इस स्टॉक ने 17 जनवरी को इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया था। अगले दिन भी ये नीचे ही गया, पर पिछले 2 दिन से ये निफ्टी 50 के अगेंस्ट मूव कर रहा है, मतलब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या होगा कि जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसको इस पर्टिकुलर लाइन पे रेजिस्टेंस आएगी। तो इसमें 3 मेजर लेवल्स निकल कर आ रहे हैं रेजिस्टेंस के। तो पहला तो 328 है जहां पर इसने आज क्लोज किया है। दूसरा ये लाइन होगी जहां पर भी इसको टच करेगा, क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो वो 333 के पास ही होनी चाहिए, 331 332। बट 333 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा आने वाले दिनों में। और अगर एक बार 333 टूट जाता है तो फिर ये 341.50 तक जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। बट अभी इसको रेजिस्टेंसेस आएंगी कहाँ पे, इस पर्टिकुलर लाइन पे 333 के लेवल पे और 341 रुपए 50 पैसे के लेवल पे। पर अगर वेदांता लिमिटेड इस लाइन के नीचे ही ऑपरेट करता रहता है बाकी दिन भी, तो हो सकता है कि हमें फर्दर फॉल नजर आए। उस केस में हमारे लिए सपोर्ट लेवल्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो हम मेजर सपोर्ट बता रहे हैं आपको। जो मेजर सपोर्ट है वो इसको मिलेगा पहला 318 रुपए पे, और फिर उसके बाद 309 रुपए पे। बीच में छोटे मोटे सपोर्ट्स होंगे, पर क्या वो वेदांता होल्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। बट जो मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं वो 318 और 309 के निकल के आ रहे हैं। तो अगर किसी के पास वेदांता लिमिटेड है तो वो इस लाइन को ध्यान में रख सकता है। अगर एक बार स्टॉक दोबारा इसके अंदर एंटर कर जाता है ट्रायंगल पैटर्न के अंदर, तो हो सकता है कि जो ये वीकनेस अभी इसमें नजर आ रही है ये खत्म हो जाए। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट करेगी। तो जहां पर भी अंदर घुसने की कोशिश करेगा वहां पर इसमें रिवर्सल आ जाएगा। अगर ये कंसोलिडेट करता है और फिर नीचे गिरता है तो फिर हमें सपोर्ट लेवल्स को दोबारा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेजरली अभी 318 और 309 निकल कर आ रहे हैं, और ये हम डेली चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं वेदांता लिमिटेड के। तो प्रोजेक्शन हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि जो विड्थ है वो अराउंड 70 पॉइंट की है। तो 70 पॉइंट नीचे गिरने का मतलब है कि वेदांता लगभग 260 के लेवल तक जा सकता है। बट वो अभी एकदम से तो होता नहीं लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस उसमें कुछ न्यूज आने वाली है, कुछ उल्टा ही काम चल रहा हो। तो इसलिए आप इन 2 सपोर्ट लेवल्स को दिमाग में रखिए, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस का दिमाग में रखिए कि 333 और 341 रुपए 50 पैसे ये क्रिटिकल लेवल होंगे। एक बार ये टूट गए तो फिर हमें और फर्दर रेजिस्टेंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे छोटी छोटी निकल के आएंगी 345 350, तो फिर हम आपको अपडेट करते चलेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, कमेंट्स या सजेशंस हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन में रहिए, क्योंकि इस स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का। हाँ, अगर ये एक बार इसके अंदर घुस जाता है तो फिर डर थोड़ा कम रहेगा, बट फिर भी इट इज ऑलवेज बेटर
कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आप कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।